सादर नमन करते हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नमन करते हुए एवं समस्त निर्णायक मंडल को नमन करते हुए मैं कनक चौहान उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा से आपके समक्ष आज के विषय संविधान दिवस के 11 संकल्पों पर अपने विचार साझा करने जा रही हूँ। महोदय, वर्तमान में परम आवश्यक है कि यदि हम अपने पावन संविधान की बात कर ही रहे हैं तो एक क्षण रुकें और सोचें कि क्या होता यदि संविधान न होता। शायद हम आज भी भटकती नौका में उफान ले रहे होते, या कह दें कि अन्य राष्ट्र हमारी हालत का अनुमान ले रहे होते। लेकिन यह हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे भारत संप्रभुता और समाजवाद का एक राष्ट्र है। ये हमारा संविधान ही है जो हम भारतीयों को लोकतंत्र समाजवाद का हिस्सा बनाता है। महोदय, संप्रभुता, समाजवाद और वसुधैव कुटुंबकम का नारा आगे बढ़ाते हुए हम इस भारत को संवैधानिक मूल्यों को अपनाकर इतना आगे बढ़ा सकते हैं कि हर दिल, हर कर्म, हर गली में अब्दुल कलाम से लेकर प्रतिभा पाटिल मिल सकती हैं और विश्व भर में ये परचम हम लहरा सकते हैं कि दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ, यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बब्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, शोभित हिंदुस्तान हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारत। आगरा की कनक चौहान के पश्चात आगरा की ही सोना गहर। उसमें 1 मिनट, जो ऊपर कंट्रोल जैसे माननीय विधायकों का काउंटडाउन शुरू होता है टाइम का, तो वैसे ही स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो ताकि उनको पता है। नहीं, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, फॉरन में बड़ा कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जैसे विधानसभा के दिन होता है। अगर पॉसिबल हो तो बड़ा कर है, पॉसिबल? हाँ, और बड़ा करो इसको। आप काउंटडाउन आपका चालू होगा तो आपको पता रहेगा कि वो है ऊपर टाइम, इधर वाले इधर देख सकते हैं, इधर वाले ऊपर जो देख सकते हैं। यस प्लीज, इनका स्टार्ट करिए। आगरा की सोना गहर, कृपया प्रारंभ करें। Good afternoon, everyone. My heartfelt gratitude to respected dignitaries and fellow participants. Today, I'm going to speak on the topic 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties, and progress. This journey can be viewed through 2 key aspects. How far have we come and how far do we need to go? On to the first aspect, I see how our freedom struggle was fundamentally a fight for justice, equality, and rights. Dr. B.R. Ambedkar's movement against untouchability was advocating for justice for Harijans, while Mahatma Gandhi's Salt March demanded consumer rights for Indians. The culmination of all these struggles resulted in the Indian Constitution, which finally granted to every Indian the rights and the system of governance they truly deserve. Before independence, our India was a nation deprived of even the most basic forms of sustenance. Our people were humiliated and insulted at every point under the shackles of colonialism. Our resources were exploited and we were treated as second-class citizens in our own land. But after independence, our achievements from the creation of NAM to the victories in wars, the smiling Buddha, the green and the white revolutions, have all stemmed from the principles enshrined in our constitution. Today, India is consulted at global decisions and nations seek to engage with our growing markets because they recognize our strength. The difference between then and now is, in simple terms, freedom. This freedom is the result of the sacrifices and intellect of our great Indian leaders and people embodied in the Constitution. Today, if we are able to assemble here peacefully and share our viewpoints, it's because of Article 19. Today, if we all have an equal chance to speak without any discrimination, it's because of Article 15 and 16. But my question is this enough? This question brings me to the second aspect of our Constitution's journey. As we move towards becoming Vikasit Bharat by 2047, we need to take some steps and make some changes in our constitutional journey. The first step would be to move towards peaceful protests
that do not harm the integrity of our nation. It deeply saddens me to see Indians fighting in the name of language, a tool of communication, not division. Let's prioritize teaching our people the language of peace, love, and tolerance first before promoting any other language. Next, the directive principles of state policy must be made legally enforceable, and women who once had to fight for getting out of their homes now have to fight battles against sexual harassments of all sorts. The need is for stricter punishments to not only punish the culprits, but also deter all those who view women as objects. Lastly, ironically, now when we have the right to preserve our own culture, our Indian youth are readily embracing K-pop and hip-hop at the expense of our own cultural heritage. While it is fine to appreciate foreign culture, it becomes a matter of great concern and shame if we forget our own. I would like to conclude by saying that this constitution is a testament of our nation's resilience and determination, and as responsible citizens of India, it is our duty to uphold its values and contribute to building a just, inclusive and Vikasit Bharat. Jai Hind, Jai Ma Bharat.